It is time for an appraisal. It is time for news broadcasters to look beyond investing in big cities. Has the news media got its focus right? Is it time to move on and reimagine news coverage from a pan-India lens? Discussing this and much more at the NBF National Conclave is an esteemed panel on the theme Future of News, News Beyond Lutyens. Let's welcome them with a loud round of applause. Let's please have on stage now Rajya Sabha Member of Parliament and Senior Leader of the BJP, Sudhanshu Trivedi ji. Dr. Trivedi, please come on to the stage. We also request SP National Spokesperson Ghanshyam Tiwari to join us. As well. Please come on stage, sir. Atul Anjan, Senior Leader of the CPI, could we please also have you on stage? And the moderator is also with us, Mr. Hussain of News Live. Let's get you on stage as well, sir. And we are, of course, going to hand over the floor to Mr. Hussain. And the rest of the gentlemen as well. Yes. Over to you. Let's take this conversation all yours. forward. A very good evening to all of you. That has been always the grouse that news beyond Lutyens. That has been always the grouse from, say, people in the east, northeast, and down south. And I think in this just about an hour back, it has already been deliberated at length. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma has clearly spelled out how the media, Lutyens media, has seen the Northeast or has covered the Northeast. And a little while back, Y.S. Sharmila has expressed her anger and dismay that her 2,000 odd Padyatra has not been covered well. I would like to ask before that just one small thing that a friend of mine told me. He's a software engineer working in one of the top MNCs in Bangalore, and in their cafeteria there were 3 television news channels on display. 2 were in English and 1 in Kannada. And in all those channels, there were Mumbai floods being shown. He said that I've got full sympathy and I really sympathize with the people out there that are facing the hardships. But he asked me, we face about a month of floods in Assam every year, annual feature. But why don't we get the coverage? As a journalist, he had asked me. And honestly speaking, I didn't have much answer to that. So I'm looking for an answer. And as our friends out there said that there has to be some agenda set by the Lutyens media. The media editorial decisions has to be made. So let me begin by asking Mr. Ghanshyam Tiwari, a young politician. You have taken part in a lot of debates, but I'm very curious to know, have you ever taken part in any discussion related to Northeast, or just because I come from Assam? So I'm very interested to know, have you ever taken part as a national spokesperson in some discussion in a mainstream media on the Northeast? Good evening, friends. Thank you so much for NBF, its organizers, Arnab, and other esteemed members of NBF team for inviting us here. And let me start by paying my prayers to the late Netaji. There is a prayer that is held across Uttar Pradesh for his departed soul. As far as your question is concerned, I think let's talk from the moment right now. In 2022, this is in the last 6 years of my being on television, I have participated in the least number of debates. And the reason is that I very vocally told people who would invite, people who invite guest coordinators here,
here that I don't participate in Hindu-Muslim debates. That reduces 70% of debates that happen on television channel. I don't participate in debates ki Modi ji mahan hai. That reduces another 20% of debates on Indian national television channels. And then the remaining 10% of debates that exist, you can define whether they represent Northeast or whether they represent Tamil Nadu, whether they represent Andhra Pradesh, Telangana. My father served Air Force. I grew up traveling across the country, largely living in southern states. And even the Doordarshan at that time would cover the entire nation. The CSDS has today released the survey of who are the viewers of various news channels. It is absolutely clear and that in this version of news is a business. It's a business where advertisement is played out. You have to ask who the advertiser is. You will play out an advertisement as per your viewers. If more than 50% of viewers of a channel, as the CSDS Lok Niti survey, are of one leaning, then you advertise products for that leaning. Now the question is, what is getting advertised? As I said, 70% Hindu-Muslim debates. Who wants to advertise Hindu-Muslim debates? There's no journalist here who will say that prior to 2014, every week they will do 3 or 4 Hindu-Muslim debates. What happened? That after 2014, they are forced to do every week 3 or 4 Hindu-Muslim debates. So if the advertisement becomes the idea of conflict in society, the advertisement becomes not the price of milk in Delhi or the fact that in an exam, you tell me, sir, if a government organizes the exam, and 100 students apply for it, what is failure? If 40 students do not even reach exam centers. In Uttar Pradesh, when the media played its usual agenda, 36 lakh students applied for an exam. In a government, we are talking about Modi ji giving some job bonanza. 36 lakh people. Do you know how many people did not reach the center? More than 16 lakh people did not reach the center. So we don't know what the agenda is, but we know who the advertiser is. And for that, I have brought the newspaper. This is Indian Express, one of the more centered newspapers. Look at the Indian Express. The one that fell right now is economy, by the way. That's how limited the economy is. This is the first page of Indian Express. So when news platforms become businesses that advertise, you must ask who the advertiser is, and that will tell you what the news is going to be. Thank you. Sudhanshu Trivedi ji, I remember Mizoram Chief Minister Zoramthanga, he very articulately described saying that New Delhi only listens to the sound of bullets because at that time insurgency was at its peak. But now with insurgency on the downslide, things are a little bit looking up. But let me ask you, do you agree to the fact that the more we are away from, the farthest from Delhi, the coverage in terms of the media coverage gets lesser? That's what Y.S. Sharmila a few minutes back had complained. So do you agree to that fact that Delhi mainstream media cannot see beyond Delhi in terms of news coverage? Actually, the problem with Lutyens zone was not geographical distancing. It was a consistent distancing from the soul of India. Mindset? I am just telling you, if there is something in Northeast happening which is having a potential of having a negative impact on the national consciousness or national integrity of India, then it's a news. And even if something happening in just 50 kilometers away from Delhi in a village which is having potential of putting a negative impact on the social fabric of India or the national pride of India, it's a news. But if something positive happening, it's not a news. That's why I want to put forth a fact. He was asking about the advertisement and funds and others. I would just like to say, now look at the decades 60s, 70s and 80s when Lutyens zone has reached to its zenith. What was the sources? Mitrokin's archive, KGB in the world, part 2. The details are there. Yuri Bachmanev, who was here, a KGB agent who was working here as a journalist, now he has disclosed what was the sources and how at the time the media and those who are considering themselves as an intellectual stalwart. I am not disrespecting anybody, but quote unquote in the words of Yuri Bachmanev,
he was saying they were the useful idiots for us. It was his word. Because we were just watching that how useful he can be. For which agenda? He said that he was given an agenda to destroy the Indian culture. Though he subsequently became admirer of that. And that's why, if I want to say 1975 during emergency, I'm not having that type of memory, but hardly Lutyens media was taking any initiative in a movement against emergency. But that created a history. Now, from my memory, late 80s, entire Lutyens media was against BJP and BJP kept on rising. 89 we got 86, बस हो गया, इसके बाद नहीं. 91, 120, अरे बस maximum हो गया, इसके आगे नहीं. 196, 190, हो गया, इसके आगे नहीं. Entire Lutyens media was against Bala Saheb Thackeray in the decade of 90s. He kept on rising. सब कहते रहे बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी लुटियंस मीडिया में. We formed the government. Entire decade of 2000, मोदी जी के खिलाफ. मोदी जी बढ़ते रहे. मोदी जी कभी नहीं आएंगे. आ गए. एक बार हमारा भी साथ दिया था. 2004 इंडिया शाइनिंग और हम नहीं आए. तो नाउ इट इज फॉर लुटियंस मीडिया टू इंट्रोस्पेक्ट कि आपके पास वो कौन सी जादू की छड़ी है कि आप देख ही नहीं पाते हैं या जो आप देखते हैं वो हमेशा गलत ही देखते हैं. दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट दे हैव नाउ स्टक इनटू एन एरा व्हिच इज अ pre-2000. So I would like to conclude with a sentence. After we first time got a clear majority on 16th of May 2014, so I am quoting 18th May 2014, London's which was Guardian, Sunday Guardian of London, because Lutyens media respects the foreign media. Sunday Guardian of London has said that 16th of May 2014 should be considered as a date on which Britishers finally left India. Because from 1947 onwards, in the various systems, thought process, all things were going on mostly which were the carrier of the British colonial legacy. For the first time, that type of organization has got the power which has no connection with the previous British colonial legacy, and Lutyens zone was nothing but a hangover of the previous British Raj, and when the Raj Path has become Kartavya Path, so I think that Lutyens should try also to relook at your own path. Atul, Anjan, a few minutes back, as I have been repeatedly telling, Sharmila ji had also said the same thing. South, then East, Northeast. Sikkim generally comes to the forefront only when there is a Doklam-like standoff. Arunachal Pradesh, Assam Chief Minister has rightly said a few moments ago, saying that only when there is a standoff that the media shows or covers it. But when there are something, the Indian Army does something very good, it's never been projected. So what, according to you, you have been such a seasoned senior politician, you must have seen this or you must have observed this kind of disparity. देखिए, भारतीय समाज बहुत विविधताओं का समाज है. Sorry, I am speaking in a language which is known and spoken by the overwhelming majority of this country. And I think the message of this NBF must go to the maximum number of people. So I'm using that in. You should not take it that I'm very chauvinistic about my Hindi language. But I should also say, don't be very, 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 very dear to that language, which is an alien language and is spoken by only 3 crore of people of this country. But anyway, जब हम गुस्से में भारतीय आ जाता है तो अंग्रेजी बोलने लगता है. भारतीय जब गुस्से में आता है तब अंग्रेजी में बोलने लगता है. लेकिन समस्या समाज की ये है, समस्या समाज की ये है. भारत के अंदर जितने राज्य हैं उन राज्यों की समस्याओं को भारत का न्यूज़पेपर, भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर करता है. एक जमाना था जब टीवी नहीं था. कौन जानता था फिजो को? कौन जानता था नागालैंड के आंदोलन को? कौन जानता था आईएम को? कौन जानता था लालडेंगा को? ये प्रिंट मीडिया था. अब आप कह देंगे कि वो बिल्कुल किनारे पर था. नहीं, सारे देश जानते थे, वो मीडिया के थ्रू जानते थे और बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आती थी.
एक जमाना था जब अखबारों को पढ़ते थे लोग, समाचार पत्रों को पहले पेज पर पढ़ते थे। ये क्रिकेट में हो गया, ये हॉकी में हो गया, दुनिया के पैमाने पर ये हो गया, भारत का ये हो गया, प्रधानमंत्री ने कहा। आज पहले पेज पर एक अधनंगी लड़की, कहां है महिला वो तमाम कार्यकर्ता, एक अधनंगी लड़की मर्सिडीज के सामने खड़े होकर के प्रचार कर रही है कि 30 लाख रुपए इस वक्त मर्सिडीज पर हमने रिलीफ दे दिया है, आओ लूट लो मर्सिडीज को। कहां है वो लोग? फर्स्ट पेज का वही हाल है, सेकंड पेज का वही हाल है, थर्ड पेज में अद्धा जो छपता है उसका भी हाल है, फोर्थ पेज में न्यूज है कि रणबीर कपूर कटरीना कैफ के घर से निकल गए 4 कॉलम के। तो आप देखिए ना क्या है स्थिति। हम लोग जब राजनीति में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, ये हमारे छोटे भाई की तरह, बहुत स्नेह है मेरा इनके प्रति, दोनों के प्रति। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का लखनऊ का प्रेसिडेंट था। मैं एक प्राइमरी के स्कूल से, गांव से पढ़ के आया था, अंग्रेजी नहीं जानता था, और अंग्रेजी न जानने की वजह से मैं चेन्नई के रेलवे स्टेशन पर जूतों से पीटा गया था, जूतों से, एक आध बार नहीं कई बार पीटा गया था। सुनीता सत्यार्थी जयपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष थी स्टूडेंट यूनियन की, वो हिंदी बोल रही थी, वो पीटी गई थी। वो दौर था कुछ और, वो दौर था कुछ और। फिर मैंने अंग्रेजी सीखने की कोशिश की, मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया, मेरे परिवार के, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया। लेकिन हम तब पढ़ते थे तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो देखते थे कि इंदर मल्होत्रा ने एडिटोरियल क्या लिखा है, एक्सप्रेस में हृदय हरिमोहन कार्लेकर ने क्या लिखा है, गिरिलाल जैन ने क्या लिखा है, प्रभाष जोशी ने क्या लिखा है, नवभारत टाइम्स में राजेंद्र माथुर ने संपादकीय क्या लिखा है। आज तो संपादकीय पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, देयर इज नो एडिटोरियल, देयर इज ए प्रोप्राइटोरियल। पढ़ो प्यारे, प्रोप्राइटर क्या कहता है, प्रोप्राइटर क्या कहता है। यह स्थिति जब आ जाए मीडिया की तो क्या करेंगे आप? महत्वपूर्ण खबर 7वें पेज पर चली गई। अगर हेडलाइंस ना हो टेलीविजन की तो टेलीविजन भी देखने लायक नहीं है। बदलो, बदलो। आप कह रहे हैं लोगों की गरीबी, गुर्बत बिहार में क्या है, और नॉर्थ ईस्ट में पानी आ गया, सिक्किम इतना खूबसूरत ऑर्गेनिक स्टेट है, उसके बारे में कौन लिख रहा है? कुछ नहीं लिख रहा है। बदलो अपनी जहनियत को। एनबीएफ ने यह काम किया है, अर्नब जी इस काम को और आगे बढ़ाओ। व्हाट शुड बी द कंटेंट? कंटेंट क्या होना चाहिए? ये पीपल्स ओरिएंटेड कंटेंट होना चाहिए। जनता के सरोकारों का कंटेंट अखबारों में और टेलीविजन के मीडिया में होगी। डेवलपमेंटल स्टोरी होगी या प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाया जाएगा? लीडर अपोजिशन की भी बात आएगी कि नहीं है? विपक्ष की बात का स्थान तो मिल ही नहीं रहा अखबारों में। विपक्ष क्या कहता है, लगता है भारत में संसदीय लोकतंत्र का विपक्ष गायब हो चुका है। सरकार चाहती है कि नहीं चाहती है मुझे नहीं मालूम, समाचार पत्र और तमाम लोग तो यही चाहते हैं। सिर्फ मैं एक बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत लंबी बात कहने से पहले एक आध शेर कह देने से सारी बात कवर हो जाती है। मशहूर शायरा मीना कुमारी एक बहुत अच्छी अदाकारा भी थी और शायरा भी थी। गुलजार साहब ने उनकी पूरी शायरी को एक डायरी में प्रिंट किया है। उसमें एक जगह लिखा है उन्होंने, मीना कुमारी ने, कि मसर्रत पे रवाजों का सख्त पहरा है। आपके रवाज के लिए, आपके रवाज के लिए मीडिया, मसर्रत पे रवाजों का सख्त पहरा है। और गरीब आदमी आपको पढ़ता है तो क्या कहता है? मसर्रत के पर रवाजों का सख्त पहरा है, न जाने कौन सी उम्मीद पर दिल ठहरा है। और मेरे जैसे लोग ये कहते हैं कि तेरी आंखों में झलकते गम की कसम, ऐ दोस्त दर्द का रिश्ता बहुत गहरा है। इसको समझेगा जिस दिन मीडिया काम बन जाए। That was Atul Anjan ji in his inimitable style. He had mentioned one very interesting thing, and which I would like to endorse, that this platform has given us, editors like us, a chance to, this is a bridge kind of a thing between the mainstream and the regional media. So thanks very much to Arnab Can I for add one floating thing? this. What he has said? अब इन्होंने एक शेर कहा है, तो लुटियंस जोन वाले जिस जुस्तजू में अपने दौर में चलते रहे, उनको भी मैं एक शेर में कहना चाहूंगा कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला,
पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। Again, like, this turning out to be a shairi kind of a session. But And then- one more thing Yes. on the issue of representation of the opposition, sir. Now we are sitting in this era. 2/3 is the representation on Yes. media is of the opposition. Never was when prior to 1998 when BJP first time came in power. और एक दौर तो ऐसा आया था जब पूरी तरीके से मीडिया को रौंद दिया गया था। अब जब आपने कहा तो सबसे बड़े शायर हुए गालिब, उसके बाद हुए शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक, और उसके अलावा साहिल लुधियानवी। तो उस जमाने में तो आपको ध्यान होगा, आप लोगों की तो युवावस्था की बात है, हम लोग होश संभालने से पहले की बात, क्या कहा जाता था इमरजेंसी के बारे में, ऐसा कंट्रोल कर लिया गया कि अब तो गालिब, ज़ौक, साहिर, मीर सरकारी और शायरी की हो गई तासीर सरकारी। यानी सरकारी तासीर में लिखना पड़ता था। और आज प्रधानमंत्री जी को आलोचना छोड़िए, कटु आलोचना छोड़िए, घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग करके, मौत की कामना करके, मौत का प्रकार बताकर यह कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो मेरे विचार से those who are trying to project these type of narrative from the Lutyens zone should again try to introspect. That's why they are unable to understand exactly the place where they are standing. Yeah. I think one point I just want to mention it here. In 1975, when the emergency was imposed, ये हिंदुस्तान में ही था, भारत में ही था संभव, जब तमाम अखबारों ने एडिटोरियल्स ब्लैंक कर दिए थे। भूल जाते हैं आप, विरोध का क्षण उस वक्त भी हिंदुस्तान के पत्रकारों में था। निखिल चक्रवर्ती, हिरण्मय कालेलकर, इंडियन एक्सप्रेस, रामनाथ गोयनका, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंदर मल्होत्रा, वो भूल जाते हैं। प्रतिरोध की शक्ति तब थी, लेकिन आज हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो रात कहेंगे। Well, I think it is important that this term Lutyens media is reflected upon in the light of what happened in the most terrible years that India has faced in the last 3 years, especially COVID. How did Lutyens, or whatever you call, I prefer the call somebody made, that lumpet media. How was it covered? Who told that Tablighi Jamaat was responsible for COVID? How was it covered? When the entire world was fighting that how should governments respond to COVID, we made it a communal virus. Who did it? Can anyone answer? Can anyone appreciate that? Did not Minister and Spokesperson, Chief Minister of Uttar Pradesh, participate in that debate? They fanned those discussions. The anchors, whether you call it Lumpert, Lutyens, whatever you call it, they fanned those debates. Then nobody was ready to talk about the migrants, but we are ready to speak about Riya Chakravarti. Who was distracting the nation in crisis? I believe that Lutyens media and this term is used to distract people. Use of history is a way to distract people because you don't want to tell that India ranks poorly on hunger index. You don't want to acknowledge that youth in India today is unable to find a job. You don't want to acknowledge that today people are taking away their children from private schools because they are not able to pay fees. When the news become focused on what the advertisers want the nation to hear, the responsibility, just like the luminaries that were talked about, the responsibility of the news goes back to the citizens. I am very hopeful. I am very hopeful that the youth, a lot of them sitting here, the youth in colleges, even those who are getting used to fake news, they are going to become used to information and will be able to decipher what is real news. Today, it is not the media that is defining the frontier of what reaches the citizens. It is individual students, individual people who read and share among their own social media, their own WhatsApp groups. I believe 10 years down the line, when we speak, these leaders may not be there, but we will see a rise of a new citizenry
who's much more informed and who take the responsibility of those editors in 1970s who took the responsibility to keep the nation informed. That new citizenry is what gives me hope. I don't have hope in the media that communalized the virus, in the media that went after Riya Chakravarti, in the media that rejects data in the face of reality, and in the media that chooses only to cover what their advertisers want to be covered. I think Sudhanshu Trivedi will respond to Ghanshyam. Actually, what happened now, the democracy is really taking shape. You asked a lot thing about what happened previously, but I want to ask, how was the reporting in 1990 Kashmir massacre? What was the reporting here? And what was the tone and tenor of reporting? So I just want to say India got independence in 47, but real democracy came in 77 when the parties have started changing the government. Otherwise there was only one party. So democracy started in 77. In 90s what happened? The entire intellectual establishment and media was controlled by one thought. There is no scope of other. Monopolies and restrictive trade practices. You have heard about that. In 90s the vernacular media became free from the clutches. And now, the national media is becoming free from the clutches of the monopoly of one thought, one and exclusive copyright of only one set of people. That's why the organizations like NBF are coming. ये और कुछ नहीं है जनाब, जागीरदारी राजे महाराजों की चली गई थी 47 में, तो उनके दिल में भी दर्द हुआ था. जब 77 में इमरजेंसी के बाद सरकार चली गई थी तो भी मोनोपोली खत्म हुई थी. अब वो मोनोपोली खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी आ रही है, दूसरे थॉट को भी दीजिए. और मैं इनकी बात से अच्छा मानता हूं, ये तो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं. अब प्रॉब्लम जानते क्या हो गई है? प्रीवियसली आपने अच्छा कहा, एडिटोरियल्स में लिखा जाता था, फिर मैं कह रहा हूं वो तो एडवर्टोरियल्स होते थे, और वो भी कहां से स्पॉन्सर्ड होते थे. मैं और भी 3-4 किताबें बता दूंगा. अब सब डिटेल में कैसे कैसे क्या क्या लिखवाया जाता था, भारत से ही नहीं बाहर से भी लिखवाया जाता था. वो सारी बातें तो अपनी जगह, परंतु अब परिस्थिति में बदलाव आया है. टेक्नोलॉजी ने मार दिया है साहब. अब तो सबके हाथ में मोबाइल है. इफ एनीबडी वांट्स टू वेरीफाई एनी फैक्ट, आई कैन से इवन बाय यूजिंग इंटरनेट एट लीस्ट अप टू 90% ही और शी कैन रीच टू द ट्रुथ. अब बड़ा मुश्किल है इस बात को कंट्रोल करना. फॉर एग्जाम्पल 2014 से पहले बाबा साहब अंबेडकर की बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान वॉज वर्चुअली आउट ऑफ इंटायर अंबेडकर साहित्य. आपको मिलती नहीं कहीं, यहां खूब खोज डालते नहीं मिलती, बट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थी. अब वहां से अवेलेबल है. अब तो पीडीएफ भी है, जो आदमी चाहे पढ़ सकता है. दिस डेमोक्रेसी इज क्रिएटिंग रफल्स एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट देयर एरा हैज गॉन. लाइक राजे रजवाड़ों का एरा 47 में गया था, 75 साल के बाद इनका एरा जा रहा है, जिसे वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. इसलिए ओपन माइंडेड होकर. और लास्ट में आपने बात कही कि कंट्री के डेवलपमेंट और इसकी बात डिस्कस होती है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, अभी आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार हम 6.1% ग्रोथ, बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाईएस्ट एमंग ऑल मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. वही सीएमआई का डाटा जिसको 2 महीने पहले कोट करके कहते थे कि साहब हमारी जो बेरोजगारी है वो मैक्सिमम है 8.4%. दैट सेम सीएमआई हैज सेड इन द मंथ ऑफ सितंबर इट हैज कम टू 6.4%. एंड आई वांट टू से एन नंबर ऑफ डिबेट्स यू हैव सीन. 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 50 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था, 50 साल का सब कुछ. यू हैव हर्ड दिस फेज. अगर ये जमाना नहीं होता तो ये 50 साल लोगों को सच लगता. अब भूल गए लोग. एनीबडी कैन चेक 1991 डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी, सोना गिरवी, फॉरेन एक्सचेंज इज अबाउट लेस देन 1%, बेरोजगारी की दर 14%, सॉरी रेट ऑफ इन्फ्लेशन 14%, और जाने क्या क्या 2% ग्रोथ रेट रहती थी, सब कुछ रहता था. एनीथिंग कैन बी चेक्ड. सो दैट monopolistic control is being diluted and the democratic forces emerging in the field of media, which is becoming a difficult thing to digest. Who are considering their feudal fiefdom feeling of controlling the intellectual establishment of India. Yeah, just let me put on record, if it will be unfair if I don't put on record. Of late, things are beginning to look up, and most of the television channels are covering East and the Northeast and South, and I think Ornob has done
one good thing is that he has been, since his channel is covering east or northeast a little bit aggressively, other channels are following suit because they cannot afford to ignore once one channel covers that particular area aggressively. So definitely things are beginning to look up, and one must say that it's a little bit, news is going beyond Lutyens to an extent, but yes, we need to see more. Anjan, just things have to change, isn't it? It is very much required. You're talking about the MRTP and other things. In the media, पहले ज़माने में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप होता था, ट्रिब्यून का ग्रुप होता था, अजीत का ग्रुप होता था, लोकमत ग्रुप हुआ करता था, सकाल ग्रुप हुआ करता था, बिहार का 2 अखबार होता था, लखनऊ के अंदर स्वतंत्र भारत और पायनियर का ग्रुप होता था। आज क्या हो गया टेलीविजन में? एक कंपनी, राव जी, 60 और 65 टेलीविजन चैनल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इज इट डिसेंट्रलाइजेशन? एक बाबूजी सभी के मालिक बन गए, दूसरे उसमें आ गए। ये मोनोपोलाइजेशन है ना। और जब मोनोपोलाइजेशन होगा तो खबरें भी मोनोपोलाइज तरीके से आएंगी, उसके अंदर कैरेक्टर नहीं रहेगा। ये एक बड़ा खतरा है। मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई ने डेमोक्रेसी की बात कही। इससे पहले डेमोक्रेसी नहीं थी देश में, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी थी। आज पिछले 10-15 वर्षों से देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के सेशंस घटते चले जा रहे हैं। मिनिमम 100 डेज के पार्लियामेंट के सेशन होते थे, असेंबलीज के सेशन होते थे। 3 दिन के अंदर बजट सेशन होके, अभी उत्तर प्रदेश का बजट सेशन, मध्य प्रदेश का बजट सेशन 3 दिन में, राजस्थान का बजट सेशन 3 दिन में खत्म हो गया। देयर इज नो डिबेट। ये डेमोक्रेसी है। इशू वाइज चर्चा नहीं होगी, हेड वाइज चर्चा नहीं होगी कि बाल कल्याण पे कितना खर्च होगा, शिक्षा पर कितना खर्च होगा, स्वास्थ्य पर कितना खर्च होगा, यहां खर्च गलत है, इसको घटाइए, वहां बढ़ाइए। ये डेमोक्रेसी है। जवाहरलाल नेहरू का वो शब्द अच्छा नहीं लगता है लोगों को, लेकिन वो सही है। फ्रीडम इज इन पेरिल, डेमोक्रेसी इज इन पेरिल, डिफेंड विथ योर ऑल माइट। आज जरूरत इस बात की है कि जमहूरियत को बचाया जाए। बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी। मैं जिस राज्य से आता हूं, अब बोलने की आजादी नहीं है, प्रदर्शन करने की आजादी नहीं है, घूमने की आजादी नहीं है। घूमिए आप, लेकिन विरोध और प्रतिरोध के एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है लोग। ये डेमोक्रेसी है। तो अखबारों की भी, मीडिया की भी डेमोक्रेसी, और मीडिया का भी जनतंत्र, मीडिया की भी आजादी खतरे में है। हम सबको मिलकर के वो एनबीएफ को, इस सवाल पर सभी लोगों को, सुधांशु जी जैसे लोग और घनश्याम तिवारी जैसे लोग, हमारे जैसे लोग और आप जैसे लोग जो आजादी का मतलब समझते हैं, किसी पार्टी में हो, ये आजादी चली जाएगी तो न बोलने का अधिकार है, न रहने का अधिकार है। इस आजादी की हिफाजत के लिए अपने दल में, अपने समाज में, अपनी जगह पर, अपने न्यूज़ चैनल में जो भी स्पेस मिले उसमें अपनी आवाज बुलंद करें। यही हमारी राष्ट्रभक्ति है और यही राष्ट्रवाद है। Absolutely, absolutely. We are running short of time, and we sincerely hope that news will go beyond Delhi, beyond Lutyens, and every region in this country will get their adequate space and share. So I think, we'll have to. One of the wishes, sir, was reported, Jawaharlal Nehru. Sure. Talking about democracy and freedom of expression. Finally, first amendment he brought to the Constitution of India, that was against, first amendment to take it. कुछ परिवर्तन हुए होंगे। नहीं, मैं अब याद इसलिए कर रहा हूं कि अब कहने को तो कुछ लोग कह रहे थे कि मतवाले बेकार के थे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी गाली देने वाले पैदा हैं। आइए उनके साथ हम भी अपनी आवाज बुलंद करें, हमारे देश की आजादी का संघर्ष नया स्वरूप लेगा। चलिए जिंदाबाद। वैसे आपने एक अच्छी बात कही, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी को टेररिस्ट लिखने वाले कौन थे? यही जेएनयू ब्रांड विपिन चंद्रा,
अपनी किताब में लिख दिए थे रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, और जब यदवेंद्र सिंह संधू उनके भतीजे ने इस विषय को उठाया 2016 में, हमने पार्लियामेंट में उठाया, तो जानते क्या जवाब दिए? वो अगले वाले एडिशन में हटा देंगे, वो उस ढंग में नहीं प्रयोग होता था। और वन मोर थिंग ऑन द रिमोट इश्यूज, नॉर्थ ईस्ट में बोडो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, सेटलमेंट हो गया, एमिकेबल सोल्यूशन। देन इवन द बोडो लैंग्वेज इशू हैज बीन आल्सो सेटल्ड। दे हैव आल्सो एग्रीड दैट द बोडो लैंग्वेज विल बी इंप्लीमेंटेड एंड विद द देवनागरी स्क्रिप्ट। किसने अप्रिशिएट किया कि सेटल डाउन हो गया? नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक दूसरी बात बताऊं, आपने कहा अगर विधानसभा में खड़े होकर कोई कुछ बवाल कर देगा, बहुत हेडलाइन बनेगी, लुटियंस में बड़ा चर्चा का विषय बनेगा। बट इसी देश में मार्च 2006 केरल, बहुत दूर है ना, केरल असेंबली 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट के मेन एक्यूज टेररिस्ट अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु की जेल में था, उसको छोड़ दिया जाए, इसके लिए स्पेशल सेशन ऑफ केरल असेंबली इज ब्रॉट। All 117 MLAs, all Congress, all Communists voted in block in favor of that. No discussion. एक आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित हो गया। कभी किसी ने चर्चा सुनी है? यही था, कौन सी चीज दबानी है, कौन सी चीज उठानी है, वो मोनोपोली खत्म हो गई। क्योंकि सर उस जमाने में सबका मालिक एक था, वो एक ही तय करता था दिल्ली में बैठकर कि क्या छपना है। क्योंकि उस दौर में एक और भी अच्छाई थी, वो रिपोर्टर जाता था, डेस्क पे जाता था, डेस्क से एडिटर पे जाता था, रात में अखबार छपता था, सुबह डिस्ट्रीब्यूट होता था, 12-14 घंटे का वक्त होता था सरकार के पास। और ऐसे भी जर्नलिस्ट रहे जिन्होंने खुद लिखा, खुशवंत सिंह जी जैसे लोग, जिन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मुझे सरकार ने, मैंने उनको ये इस चीज में सपोर्ट किया तो मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बनाया, मुझे राज्यसभा दी। ये तो ओपनली उन्होंने लिखा हुआ है भाई। और इसलिए आज के जमाने में मौका ही नहीं है, 12 सेकंड में तो न्यूज यहां की वहां चली जाती है। तो अब जो भी आप जिसको भी मालिक कह लें, आज मालिक कोई नहीं, आज मालिक जनता है और मालिक टेक्नोलॉजी। मैं तो समझता हूं कि 1 मिनट, कई मुख्यमंत्री लोग अपने ऊपर 40-40 मुकदमे हैं, मुख्यमंत्री बन जाएं, सीरियस मुकदमे हैं, हम अपने आप अपने मुकदमे वापस ले लें। ये भी यही है जनतंत्र में, ये भी यही जनतंत्र में होता है। रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट जब लाला लाजपत राय को मार दिया इंपीरियलिस्टों ने, तो कहा यस, HSRA के डॉक्यूमेंट पढ़िए, उन्होंने कहा यस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पिताजी भी 18 साल उस मूवमेंट में HSRA के जेल में रहे। उन्होंने अपने को कहा यस वी आर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, वी आर रेवोल्यूशनरी। छोड़िए उन बातों को, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आज की बात करो, इसकी बात करना छोड़िए। बहस इस बात की नहीं है, बहस इस बात की है कि बिल्ली वैसे काली है या सफेद है, इस पर बहस मत करो। बिल्ली चूहा खाती है कि नहीं खाती है, ये सवाल। I think वैसे एक बात कह दूं, और मैं आपसे कहूं 22 करोड़ लोगों ने, 22 करोड़ नौजवानों ने, अभी पार्लियामेंट में जवाब हुआ, अखबारों में नहीं छपा, 22 करोड़ लोगों ने 1,64,000 नौकरियों के लिए अप्लाई किया, कहीं अखबार में नहीं छपा। संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब लिखते हुए कहा कि 1,64,000 नौकरियों के लिए 22 करोड़ नौजवानों ने अप्लाई किया था। छोड़िए, तो सर 40 IAS की नौकरियों के लिए 5 लाख हर साल अप्लाई करते हैं। छोड़िए, जाने दीजिए सबको। देखिए इसी एक लाइन हरी कथा अनंता। अच्छे लोग हर पार्टी में होते हैं। अतुल अंजान जी के पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, ही इज फ्रॉम ए फ्रीडम फाइटर फैमिली होते हैं। सोमनाथ चटर्जी इनकी पार्टी के नेता थे, उनके पिताजी हिंदू महासभा में थे। अब कई बार क्या होता है, व्यक्ति भटक कर गलत रास्ते पे चला जाता तो भी उसकी अच्छाई नहीं खत्म होती है, अच्छे संस्कार दिखते हैं और यह विचार ठीक है। सावरकर जी 1910 के पहले अच्छे थे, बाद में बदल गए, अच्छी बात है। वैसे 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब सावरकर को सजा हुई थी? विलियम वेटनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो कहा था गौमांस खाना बहुत अच्छा है। Thank you very much, Atul, Anjan ji, Sudhanshu, Trivedi ji, Ghanshyam, Tiwari. Thank you, Karinda. Thank you so much. Very gripping kind of an analysis and observation. Thank you once again for this Thank you, wonderful Karinda. discussion. Thank you, Atul Anjan. Thank you, Mr. Trivedi, and thank you, Ghanshyam. On to our next panel now. We have two very special guests. Narrative setting from a position of strength in the world, which enables the news consumer to access global news media like never before, is as ever challenging issue. Now, India is often painted with racist almost and typecasted views in the global news media. And for a country with an aim to be a global superpower and making leaps
and bounds in every industry. It's time for India to set its record straight.